पिला माने तुमको मो चैनल में फोन थे स्वागत पिला माने आम आज चैप्टर 4 जहाँ की डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पढ़ा पिला माने तो पिला माने आम इंट्रोडक्शन देखिबा तो लेट अस कंसीडर सम सिचुएशंस पिला ने सिचुएशन देखिबा आम आगे बुझिबा फंडामेंटल क्लियर करिबा तापर पिला में कोन जिबा ना सॉल्यूशन करिया पे जिबा तो पिला ने प्रथम सिचुएशन कोन पिला देखो तुम बुक रे पिला अछि तो सिचुएशन 1 कोन अछले ना सिचुएशन 1 अछि जे 2 liters ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड by 4 members of a family पिला ने यदि 2 लीटर क्षीर देछि 2 लीटर क्षीर को 4 जन फैमिली मेंबर कंज्यूम करନ୍ତି सेही पर पिला ने कहबा यदि 3 लीटर क्षीर आसो त केतना कंज्यूम करे ना पिला ने 3 लीटर क्षीर आसले पिला ने केते जाहले 6 जन कंज्यूम करे काहे कि 1 लीटर को 2 जन कंज्यूम करू अछंती तो पिला ने हम कोन जानले ना दिस सो दैट हम कोन होछि पिला ने यदि हमरा increase of number of members and increase of consumption of milk कोन होछि हम जेते कि यदि हमरा फैमिली मेंबर बढ़िबे ताले कोन पिला ने हमरा ना मिल्क कंजम्पशन मध्ये हमरा बढ़ी जीवो तो पिला ने नेक्स्ट यदि प्लान देखिबा सिचुएशन 2 देखिबा प्लान सिचुएशन 2 कोन प्लान देछि ना सिचुएशन 2 देखिबा 2 चॉकलेट्स कॉस्ट 10 रुपी दीटा चॉकलेट दाम 10 टंका आले सेबले प्लान 4 चॉकलेट्स कॉस्ट केते ना 20 टंका हे जो बेसिकली काहे कि ना एठी गोटे चॉकलेट केते 5 टंका होछि तो चारटा चॉकलेट दाम केते 5 20 टंका अल्टीमेटली हे जो प्लान तो सेठी पे हम कोन कहबा हियर हम कोन देखला हियर एन इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ द मनी स्पेंट ऑन इट माने जते चॉकलेट इंक्रीज करबो सेते प्लान एठी कोन बन हमरो मनी इंक्रीज करि करि जीवो प्लान सेबरी हमें गोटे एग्जांपल मध्ये सेवा नबा पर सपोज नंबर ऑफ स्टैम्प्स लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स शोइंग द नंबर ऑफ स्टैम्प्स ईच ऑफ सेम वैल्यू denoted by the letter x and the corresponding cost denoted by the y पिले नंबर ऑफ स्टैम्प्स देछि जाके इक्वली प्राइस गोटे नाका पीस रो यदि कहबे गोटे ना स्टैम्प रो गोटे ना पीस रो प्राइस इक्वल हबो एवं कहिछि कॉस्ट ऑफ प्राइस मध्ये इक्वल रहबो समस्त सिंपली कहबा 5टा को पिला ने 10 टका नउछनी 10 टका गोटे केते पिला गोटे को पिला ने केते बोले ना 1 स्टैम्प इक्वल केते बोले ना हमरो 10/5 इक्वल टू 2 रुपीस हे गेला 2 रुपीस तबला मैं कोन जाने 10 टका बोले केते 20 हिज जो बोले 15 को 30 रुपीस हे जो 20 को 40 रुपीस हे जो 25 को 50 हे जो 30 की स्टैम्प्स को 60 रुपीस हे जो त माने पिला ने 1 पेंसिल में 1 स्टैम्प केते कहबा पिला ने 1 स्टैम्प रो प्राइस होछ केते ना 2 रुपीस हो जाउछ पिला ने तले मैं लिखि देले पिला ने केते ना 1/2 त ना करबा रेशियो रे केते आछ पिला ने कहबा तो समस्त का रेशियो काढिबा 1/2 पिला ने कोन गोटे को 2 टका बोली कहि परिबा तो रेशियो इज 1/2 सो we can that in other words x by y doesn't change, it remains constant. So let us consider x by y equal to kete je plan equal to k x y equal to k he gele plan k equal to kete x equal to kete he jibo na k y तो ये आंसर ही जीवो तो हम सेव प्लान जे हम करिबा तो आंसर कोन कहते टू क्वांटिटीज x and y are said to be in the direct variation if x and y increases or decreases together in such a way x y remains constant प्लान कोन कहिछि आमे कोन करिया x और y कहबा हमरो यदि ताको डायरेक्ट वेरिएशन कहबा सपोज x किबा y इंक्रीज करचोंती किबा डिक्रीज करते किंतु x y का रिमेन्स कांस्टेंट रहउची ताले हम कोन कहबा प्लान से क्षेत्र रे एको हमें गोटे इनको हम कहबा नामे जे पडुची डायरेक्ट वेरिएशन बोली कहि परिबा तो प्लान एक एग्जांपल नबा सेबे देखिबा केंति x y कांस्टेंट ले हेई परुची प्लान सपोज देछि फाइंड p and q following table if x and y are very directly vary करले पिलाने p and q रा आंसर केते पिलाने हमें सपोज पिलाने में जानिथिल पिला वर्तमान हमें वर्तमान कोन जानथिले पढिथिले बे पढले जे p x y y इक्वल टू k हेले कांस्टेंट हेले आंसर बाहर जाउची x y यदि k हेई जाउची तले x इक्वल टू k ना k y हेई जाउची एबे पिलाने पढले तो सेही पर पिलाने में करबा x रे वैल्यू दे दिजी 5 p and 10 सेही बले y रे वैल्यू दे दिजी पिलाने 8 32 and q तले पिलाने में देखिबा केते कोन होउची तले x y पिलाने में k कांस्टेंट में x y इक्वल टू k होउची कांस्टेंट पिलाने k होउची कोन ना कांस्टेंट सेही पर हम देखिबा पिला माने तो हमें जानिथिले पिलाने ये ऑल आर इक्वलेंट फ्रैक्शन पर भी कहि परिबा पिलाने तो 5/8 इक्वल टू p/32 इक्वल टू 10/q तो एभली क्षेत्र में तब देखिला पर हम जानिले जे 5/8 इक्वल टू कोन p/32 हेई परिबो 5/8 इक्वल टू कोन बना हमरो p/32 हे जो प्लान तो p प्लान जे बाहर करिया प्लान हम कोन करिया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करले ना कर दबा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करले केते हे प्लान ना हमरो 8 हे जानता 8p इक्वल टू 32 into 5 तो p इक्वल टू प्ले केते हे जानता नंबर 32 into 5/8 प्लान काटले केते जाउची ना 32 रुपीस प्लान केते जाउची 8 जा तो 20 हे जला प्लान प्लान हमें एमरी क्रॉस मल्टीप्लाई करि पाइबा नेक्स्ट यदि प्लान देखिबा तो 5/8 इक्वल टू आल्सो 10/q
5/8 equal to also 10/q इट में तो प्लेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले कोन पाई जे प्लेन ना हमर 5q इक्वल टू प्लेन केते 80 ही जाउछ तो q इक्वल टू 80/5 दैट इज इक्वल टू 16 प्लेन ये थला आंसर तो सो हमें प्लेन एबले आंसर हम काढिया को पड़िबो प्लेन एग्जांपल 2 आ गोटे नै देखिबा x देछि प्लेन 2 3 5 6 से देछि y 6 9 17 20 देछि प्लेन तो सो हमें देखिबा तो वेरीफाई whether the x and y directly with each other or not प्लेन हम देखिबा एठी x y डायरेक्टली हमें देखिबा ये डायरेक्टली वेरिएशन होउची कि नाही वेरी डायरेक्टली होउची ना देखिबा प्लेन तो हमें हमें यदि देखिबा ए अनुसार गले 2/6 इक्वल टू 3/9 हबो इक्वल टू 5/17 इक्वल टू 6/10 हबो तो हमें जे देखिबा पिलाने सॉल्यूशन फॉर द टेबल x एंड y इंक्रीजेस और डिक्रीज टुगेदर बट रेशियो x एंड y इक्वल होवा दरकार तो सो करेस्पोंडिंग वैल्यू x एंड y इज नॉट कांस्टेंट x y इज नॉट कांस्टेंट हमें जे कहबा तो 2/6 पिला हमें के 1/3 कर देले सो 3/9 गले 1/3 गेला तो ये दी जण पिलाने वेरी गले इक्वल हो गेले बट जेते 5/17 आसुची तो इठी कोन हेउची ना रेशियो इक्वल आसु नाही इठी 1/3 आसु नाही तो 6/20 भी आसुची तो ये मध्ये प्लान 1/3 आसुनी प्लान हम कांस्टेंट 1/3 आसिया कथा तो 1/3 आसिला नाही तो हम एक खेत देखले ये कहबा ये दी जण तो सेम हेई गेले बट ये दी जण अटंती नाही तो प्लान हम कहबा नोट हम लिखबा इफ टू क्वांटिटीज x and y increases or decreases together it doesn't ensure that it is a case of direct variation if the प्लेन जदी बढ़ुची बे कमुची हमें कहि परने जे कोन ना डायरेक्ट वेरिएशन अछि बोली if the increases together then we should try if possible to obtain the relation x equal to ky हमें एटा काढी के देखि रहछि जंदी बढ़ुची तो पहले हमें कोन x y इक्वल टू कांस्टेंट मिलथि हमर दरकार जेतक हमर वेरिएशन मिलिबो तो संकर गोटी कांस्टेंट वैल्यू आसीबा दरकार जंदी इथि एंड वैल्यू आसला 2/6 1/3 आसला 3/9 1/3 जदी इथि भी 1/3 आस्तांता इथि भी 1/3 आस्तांता तो जो कांस्टेंट वैल्यू x by y तले हमें जानि परिथाते जे ये ऑल आर डायरेक्टली वेरिएशन होउची बट जेते कांस्टेंट आसीबो नै तले हमें डायरेक्ट वेरिएशन होरबे लिखिबा तो हमें सेकरे लिखिबा इफ वी कैन फाइंड k then x and y in the direct variation will कहि परिबा when x by y equal to k then we can say that the x and y are the direct variation प्लान नेक्स्ट देखिबा सिचुएशन 3 की दिबा सिचुएशन 1 देखिले 2 देखिले सिचुएशन 3 प्लान देखिबा तो सिचुएशन 3 कोन कहउची we with a speed of 40 km per hour with a speed of 40 km per hour ये distance of 1200 km is covered in 30 hours पिलाने कोन देखिले ना दीदी गोटे लोक तार स्पीड केते कहउची ना हमरो 40 किलोमीटर पर आवर जाउचे तो 1200 किलोमीटर क्रॉस करे को केते लागु 30 आवर्स पिलाने तको लागुचे जे तो 30 इयर्स लागुची तले हमें कहया पिलाने तो देन द स्पीड इंक्रीजेस टू 60 किलोमीटर तो पिलाने कहबा त स्पीड केते जाउची ना इंक्रीज हो जाउची 60 किलोमीटर ही जाउची then the distance 1200 kilometer के 20 hours से कवर कर से तो कहला पिला में 1200 by 40 इक्वल प्ले 30 आउची इति देखिए 1200 by 60 इक्वल 20 आउची प्ले ने हमर टाइम पड़ी आउची यदि देखिबा this so the increases in the speed causes the decreases in the time ई क्षेत्र में कोन देखले पिला माने ना स्पीड इंक्रीज हेले टाइम डिक्रीज ही जाउची तो टाइम को डिक्रीज हो जाउची बिला हम देखिले तो सो हमें दिस सिचुएशन आई भी गुडे नबा कोन नबा ना फॉर डूइंग ए 40 किलो वर्क 16 वर्क टुगेदर इन 30 डेज बट 20 वर्क रिक्वायर 24 डेज पहले हम देखिबा 16 वर्क को केते दिन लागुना 30 डेज लागुतला बेले बट 20 वर्क्स को लागुची हमरो नामरो 20 वर्क्स को 20 वर्कर्स को 24 डे लागुची thus the an increases of the number of work तो हम कोन करछि ए क्षेत्र देखिले कोन ना नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करले हमरो टाइम कोन जाउची कमी मध्ये जाउची रिमेन्स the decreases of the number of days work remain the same कोन वर्क सेम रहउची त हमें कहउची देखिले हमें जे देखिले यदि वर्कर कम बढ़ुची तो कोन जाउची टाइम डिक्रीज हो जाउची किंतु वर्क सेम रहउची प्लान ए भी देखिबा हमें ए क्षेत्र देखिले ए क्षेत्र तो टिके आईडिया प्लान खर्च करे देखिदबा 16 * 30 रो मल्टीप्लिकेशन जा हबो पिला माने 30 रो मल्टीप्लिकेशन जा हबो पिला माने तो मन रखि त 20 and 24 रो मल्टीप्लिकेशन मध्ये से हबो त माने सेम इक्वल कोन लेवल
বা हम कहबा दरकार होउछ सेम इक्वल काम होउछ तो 480 इक्वल रहउछ तो हम कोन कहबा ना इफ द above two quantities are related to such a way that the change in one result in a corresponding change in the other एठी कोन देखिले ने गोटे रिजल्ट चेंज हेले अलगाटा मध्ये चेंज हेई जाउछ the two quantities are said to be in variation तो हमें कोन कहबा ए क्षेत्र में देखिले सिचुएशन 3 एंड सिचुएशन 4 देखिले गोटे चेंज हेगला आ गोटे ऑटोमेटिक चेंज हेई जाउछ तो पिला हमें कोन कहले ना को वेरिएशन बोली कहि परिबा देन हम यदि पिला ने देखिबा वेरिएशन तो देखिले तो पिला ने वेरिएशन केते प्रकार टाइप्स ऑफ वेरिएशन यदि कहबा पिला ने देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन पिला मन लगता टाइप्स ऑफ वेरिएशन यदि कहबा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन गोटे छि डायरेक्ट वेरिएशन आ गोटे इनवर्स वेरिएशन गोटे डायरेक्ट वेरिएशन आ गोटे होछि इनवर्स वेरिएशन पिला डायरेक्ट वेरिएशन का कहबा ना if two quantities are related in such way that an increases in one quantity result in a corresponding increase in other quantity vice versa इथे हम देखिबा यदि गोटे हम इंक्रीज करूचे तो आउ गोटे मते ऑटोमेटिकली इंक्रीज हेई जाउची आ गोटे जे हम डिक्रीज करूचे अलगाटा मते डिक्रीज हेई जाउची सो से क्षेत्र में कोन कहले डायरेक्ट वेरिएशन बोली कहले प्रथमे सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 थला जो सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 रे कहउतला ना ततला हमरे यदि हमें ऊपर न्यूमरेटर बढ़ौथिल तो डिनोमिनेटर बढ़ी जाउतला तो से क्षेत्र में कोन कहबा से होलिया क्षेत्र पई हमें देखुतले जे सेगरो डायरेक्ट वेरिएशन होउतला तो हमें कहबा इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड सच वे दैट एन इंक्रीजेस इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स इन द करेस्पोंडिंग इज इंक्रीजेस इन अदर एंड वाइस वर्सा माने डिक्रीज होले मध्ये पिला ने डिक्रीज होउतला ताको हमें डायरेक्ट वेरिएशन बोली कहला लास्ट सिचुएशन जो दिला देखिले ताको पिला में इनडायरेक्ट वेरिएशन बोली कहबा ताको हमें कोन कहबा ना इनडायरेक्ट वेरिएशन बोली कहबा कोन गोटे क्वांटिटी इंक्रीज हेले अदरटा कोन होउची ना डिक्रीज गोटे यदि इंक्रीज होउची तो हमरा आ गोटे कोन होउची ना डिक्रीज हे जाउची तो ये वाला सिचुएशन को हमें कोन कहबा ना ए वाला सिचुएशन को इनवर्स बोली कहि परिबा इनवर्स वेरिएशन बोली कहबा प्लस सिचुएशन 3 एंड सिचुएशन 4 इनवर्स वेरिएशन एग्जांपल प्लान मैं लिखिने नेक्स्ट प्लान आसले वर्कशीट आसले प्लान देबा तम पे वर्कशीट आसी गला प्लान फिर मैंने देछि fill in the missing number terms in the following tables if x and y are vary directly बिलेन देछि तो डायरेक्टली वेरी करूछि हम ए क्षेत्र पे कोन करे प्लान डायरेक्ट आंसर करी दबा तो पिला माने आंसर करबा तो प्लान देछि देखो फर्स्ट यदि देखिबा फर्स्ट देछि x and y दे देछि 6 अछि 8 अछि 12 अछि एंड डैश अछि 18 एठी केते हो जाउछि प्लान देखो एठी 6 से केते मल्टीप्लाई करले 18 होउछि ना 6 से 3 मल्टीप्लाई करा जाइछि तो प्लान 18 हो जाइछि डायरेक्टली कोइ वेरिएशन करूछि प्लान तो डायरेक्ट वेरिएशन रे करूछि प्लान हम यदि कहबा तो एबळे हम कहि परिया प्लान गोटे गोटे बाहर करके जिबा एबळे 6/18 इक्वल टू कने 8/x प्लान x बाहर कर दबो तो x प्लान केते हो ना हमरो 6x इक्वल टू 8 into 18 x इक्वल टू 8 into 18/6 इक्वल बले केते 8 3 24 हे गेला तो प्लान एक हम कोन लिख देबा 24 लिख देबा प्लान में 24 पाई गेले तो 24 पाई गेले माने डायरेक्टली वेरिएशन प्लान करूची माने नेक्स्ट मध्ये आरो लिखि परिबा तो प्लान सेबे हम करि परिबा तो 6/18 इक्वल टू 12/x तो एठी प्लान 6x इक्वल टू 12 into 18 हे जाउची x इक्वल टू 12 into 18/6 तो प्लान कहि देबा 12 3 केते हे जाउछ ना 36 हे जाउछ आ पई प्लान नेक्स्ट प्लान देखिबा नेक्स्ट अछि प्लान सेबा कहबा सेबडी करबा 6/18 इक्वल टू x/63 तो प्लान करबा 18 into x इक्वल टू 18 into 63 6 into प्लान केते ना 6 into 63 प्लान देखबा x इक्वल टू कहबा 6 into 63/18 21 प्लान लिखबा केते एटा ना 21 हे जो तो प्लान आरो सॉल्यूशन एई भली हेई पारिबो तो प्लान ए थिला फर्स्ट आइर आंसर सेकंड ए प्लान देखिबा सेकंड ए प्लान सेई भली आबो तो सेकंड ए भली सेवा करबा 10/5 इक्वल टू x/10 तो प्लान मल्टीप्लाई करले कोन हबो ना हमरो 5x इक्वल टू 10 into 10 प्लान कहबा x इक्वल टू 10 into 10 इक्वल टू 5 दैट इज 20 तो प्लान केते लिखि दा 20 लिखि देबा नेक्स्ट प्लान देखिबा हमें देखियो आर आंसर देखियो बिलाने आर आंसर मतलब एई भली हो बिलाने तो 10/5 इक्वल टू 30/x तो प्लान कोन करा 10 into x इक्वल टू 30 into 5 x इक्वल टू 30 into 5/10 इक्वल टू प्लान केते हो ना 15 तो आंसर प्लान केते हो ना 15
नेक्स्ट नंबर प्लान अच्छी 46 बाय केते प्लान जदि x देखिए प्लान देखिबा तो 10 by 5 equal to 46 by x प्लान कहबा 10 into x equal to 46 into 5 x equal to 46 into 5 by 10 equal to 223 तो प्लान आंसर केते जो नारा 23 जो प्लान आर सॉल्यूशन सेकंड रे ए बढा हबो प्लान थर्ड यदि प्लान देखिबा थर्ड प्लान करिबा प्लान थर्ड अछि देखो 6 by 15 इक्वल टू प्लान केते अछि ना 8 by 20 अछि नेक्स्ट अछि प्लान केते अछि ना इक्वल टू 10 by x तो प्लान हम ए दिटा में करि परिया नै करी 8 by 20 इक्वल टू 10 by x प्लान कले 8x इक्वल टू 20 into 10 x इक्वल पिते केते 20 into 10 by 8 देखो ये प्लान है 2 रे काटले 4 5 4 रे काटले 5 प्लान केते हला 5 5 जे 25 तो प्लान टी केते हि जो 25 हे गेला नेक्स्ट प्लान देखिबा नेक्स्ट रे केते अछि प्लान ना डैश बाय केते 40 हे जे प्लान आको हम जे कोन छोटा आको नै परिबा आ तो जे कोन प्लान नै करि परिबो तो प्लान में 6 by 15 भी नै करी इक्वल टू x by 40 लिखि परिबी तो प्लान लिखिबी 15 into x इक्वल टू 6 into 40 x इक्वल प्लस 6 into 40 by 15 2 3 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 8 जा इक्वल टू प्लस 16 प्लान के तार आंसर ना 16 है जो प्लान ये थिला एक नंबर आंसर आशा करे समस्त प्लान बुझी पारिथिबो क्लियरली बुझियो तो फंडामेंटल सहित तो प्लान माने चैनल को जो माने सब्सक्राइब करिनो ते चैनल सब्सक्राइब करिने और तुम संग साथी माने से प्लान शेयर मध्य करनियो प्लान संपूर्ण ओडिया रे तुम पढौची डीएवी पाठ डीएवी प्लान तुम इंग्लिश मीडियम रे तो पाइबो निहाती रूपे तो ओडिया रे बहुत कम रेयर पाइबो जे कि ओडिया तुमको जण के पाठ पढाई की दउची प्लान तुमको मु क्लियरली दउची एवं आंसर मध्य कर दउची फंडामेंटल क्लियर सहित प्लान तो आशा करे समस्त प्लान बुझी पारुथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देइची 5x weight 5 of rice weight 150 kg how many such bag of rice will weight 900 kg तो प्लान में कहबा ताको यदि हमें टेबल करी परिबा आपको आंसर एमटी करी परिबा प्लान आंसर मते एभा करबा लेट आंसर प्लान करूची लेट द नंबर ऑफ bags let the number of bags be x then तो हमें टेबल टा एभला करिया ता टेबल टा एभला करिबा टेबल टा एभला करिबा टेबल ले कोन लिखा नंबर ऑफ बैग्स लिख दे प्लान ए ऊपर लिखा नंबर ऑफ बैग्स एठी प्लान लिखा वेट लिख दे प्लान एठी कोन लिखा ना वेट पे लिखले दे 5 रे प्लान 150 होतला तो प्लान एठी किछि देइनी x इक्वल टू 900 होतला तो प्लान ताको हमें सॉल्व यदि प्लान करबा हमें जानि जे सॉल्व केमिति हेई पारे प्लान as there is a direct variation हम देखले प्लान एटा डायरेक्ट वेरिएशन होची as there is a direct variation so 5 by 100 equal to x by 900 so हम देखो प्लान 100 into x equal to 5 into 900 then x equal to 5 into 900 by 100 109 ja 900 equal to 45 तो प्लान कहबा x केते हेगला प्लान 45 तो हम प्लान लिखि दिबा hence the प्लान लिखिबा hence तो लिखिबा hence the required bags are 45 प्लान एथलार आंसर ए बल लिखा जाई परिबो पिलाने हम जी सेकंड को जीवा सेकंड क्वेश्चन करबा थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन गला थर्ड क्वेश्चन करिया पिलाने पिला माने यदि वीडियो भल लागु थाए ते वीडियो को लाइक कर दियो एवं तुम संग साथी मानो सहित पिलाने शेयर भी कर दियो पिलाने यदि को डाउट रहउची तो कमेंट सेक्शन में पिलाने तम खोला अछि कमेंट सेक्शन वाले तुम भी लिखि पारो जे को तुम डाउट रहला
पिलाने नेक्स्ट क्लास है तो मन पई डाउट क्लास रे मध्य से क्लास हम तुमको से क्वेश्चन को डाउट करे देई पारे पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन अछि पिलाने देइची द कॉस्ट ऑफ 3 kg sugar is 54 rupees what will the cost of 15 kg of sugar पिलाने सेम टाइप लिखिबा द लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट भी हम लिखि दे पिलाने लेट आंसर पिलाने करिबा let the required cost let the required cost be x rupees so आम पिलाने कौन कर टेबुल टे बनैबा ए टेबुल टा एई भली हबो पिलाने टेबुल टा एई भली हबो एट लिखि दो weight in kg एट पे लिखा कॉस्ट लिखि दे पिले माने कोन लिखि दे कॉस्ट लिखि दबा तो प्लेट 3 अछि एवं 54 हे जाई छी तो प्लेन इति कोन अछि ना 15 अछि बट केते कॉस्ट अब कहि नाही तो प्लेन की होना डायरेक्ट वेरिएशन हला तो इट इज ए कोन डायरेक्ट वेरिएशन देयर इज ए डायरेक्ट वेरिएशन there is a direct variation so 3 by 54 equal to 15 by x हे गला तो प्लान आंसर कला में केते काढी आंसर ना आंसर प्लान हे जीवो 3 into x equal to 15 into 54 x प्ले केते हे जना 15 into 54 by 3 प्लान देखोइबा 35 तो प्लान आंसर हे जाउछ प्लान 270 तो कॉस्ट फिलिंग केते 70 हम प्लान लिखि दबा hence the required cost is 270 rupees 270 rupees प्लान थला क्वेश्चन नंबर 3 रा आंसर प्लान आशा करछि समस्त क्लियरली बुझी पारुथिबो तो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा प्लान बारंबार कहू जदि का के डाउट रही जाउची तो कमेंट सेक्शन में पिलाने लिखि देई पारो प्लान जे कोई जगह तुमे बुझी परिलो नाही प्लान आमे जहा भी करले डायरेक्ट वेरिएशन करले प्लान डायरेक्ट वेरिएशन कोन नाम जदि कहबा जदि न्यूमरेटर इंक्रीज करिवो तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करिवो ए क्षेत्र वो बोथ इंक्रीज करिवे इनडायरेक्ट प्ले कोन होची ना इनवर्स कहबा इनवर्स जदि कहबा पिलाने हमरो इनवर्स वेरिएशन प्लान को हबो ना इनवर्स वेरिएशन ने हमरो गोटे इंक्रीज करले आउटे डिक्रीज हे जीवो कि गोटे डिक्रीज हला आउटे इंक्रीज हबो तो प्लान देखि नेक्स्ट क्वेश्चन ए मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर मोटर बोट का कथा 20 किलोमीटर 4 आवर जाउतला व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 7 आवर तो प्लान तो 7 घंटा रे केते डाटा कवर करिवो तो प्लान स्पीड रिमेनिंग द सेम स्पीड प्लान सेम अछि प्लान हम जे करबा ये मध्य प्लान सही भरी आंसर हबो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर प्लान सही भरी हबो तो लिख लेट द डिस्टेंस कवर बी x किलोमीटर लेट द डिस्टेंस कवर बी x किलोमीटर तो प्लान कहबा तार में टेबल कर द प्लान टेबल कला में देखिबा सेम जिंस सेम टेबल प्लान ए गोटे डायरेक्ट वेरिएशन रहउची प्लान एमति कहबा टेबल ले कर लिखवा डिस्टेंस इन किलोमीटर डिस्टेंस इन किलोमीटर इति कहबा टाइम इन आवर्स देखिए प्लान तो प्लान हम कहबा एटा केते एटा 20 एटा लाबना 4 एटा प्लान x एंड एटा 7 तो प्लान हम इति कहबा कोन कहिछ ना हमरो टाइम 7 आवर केते बाट 7 आवर केते बाट डिस्टेंस कवर करिवो तो प्लान हम इति कहबा हम देखिले एटा कि कोना डायरेक्ट वेरिएशन हे जाउची ना हमरो गोटे इंक्रीज करले आउट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो तो भी कहबा देयर इज ए डायरेक्ट वेरिएशन there is a direct variation so अतः हम यदि देखिबा 20 by 4 equal to x by 7 प्लान हम कोन देखिना 4 into x equal to 20 into 7 x equal to 20 into 7 by 4 35 तो प्लान कहबा x केते हे गेला ना 35 हे गेला त लिखबा hence the required distance
is 35 kilometer, is 35 kilometer. तो पिलाने एथिला क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर. पिलाने क्वेश्चन नंबर 5 करिवा. पिलाने क्वेश्चन नंबर 5 देखो कौन अछि. क्वेश्चन नंबर 5 रे देखिवा. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देछि ये मोटर बाइक ट्रैवल 210 किलोमीटर इन 30 liters of petrol. How far would it travel on 7 liters of petrol? प्लेन देछि का प्लेन क्वेश्चन देछि ना. क्वेश्चन देछि गोटे मोटर बाइक 210 किलोमीटर 30 लिटर 210 किलोमीटर जाए. तो से 7 लिटर से केते किलोमीटर जीवो. तो पिला माने हमें जे कहबा ए टी प्लान अलगा टिके देछि. तो पिला हमें लिखि देबा आंसर लिखिया. पिला ने आंसर लिखिबा क्वेश्चन नंबर 5. तो पिला ने आंसर लिखिबा let the distance traveled by let the distance traveled be x kilometer, पिला माने हमें यदि टेबल कर दवा. तो टेबल कले में कौन देखिबा. टेबल में देखिबा डिस्टेंस लिखि दे. पिला ने एटा पेट्रोल लिखि दे. पिला कौन लिखिया डिस्टेंस एरपन एट लिखा पेट्रोल. डिस्टेंस लिखे थे 210. पेट्रोल के लिखले 30. पेट्रोल 7 ले एटा केते किलोमीटर जीव. नेक्स्ट को पिला देखिबा पिला देखिबा. नेक्स्ट कौन पिला नबो ना. एटा हम देखिले आज there is a direct variation. There is a direct variation. That means यदि पिला ने कहबा तो डायरेक्ट वेरिएशन जेहेतु हे गला. तो पिला में कौन लिखि देबा 210 by 30 equal to x by 7. x by 7. तो पिला में देखिले आंसर पिला ने कहबा इठी नंबर 30 into x equal to 210 into 7. 210 into 7. पिला ने कहबा यदि x equal to 210 into 7 by 30. भाई पिला के थेला ना 30 हे गेला. by 30. 37 जा 210 equal to 49. x पिला के थेला ना 49. तो पिला में ए जे लिखि दे. पिला ने hence the required distance is 49 kilometer. पिला ने इतला क्वेश्चन नंबर 5 रा आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर. पिला ने क्वेश्चन नंबर 6 करिया. पिला ने क्वेश्चन नंबर 6 पहले क्वेश्चन नंबर 6 कौन दे देखो. क्वेश्चन नंबर 6 देछि पहले ना क्वेश्चन नंबर 6 देछि देखो. देछि if 12 women can weave 15 meters of cloth in a day, how many meters of cloth can be woven by 20 women in a day. तो पहले क्वेश्चन देखिबा जदी 12 जन स्त्री लोक कौन करती ना हमर 15 मीटर साड़ी तैयारी करती. 15 मीटर कपड़ा तैयारी कला बेले बुणुतला बेले तमे कहबा 20 वुमेन केते बुणी पारिबे. तो प्लान देखिबा. नेक्स्ट यदि प्लान कहबा आर आंसर को देखिबा. प्लान हम एमती देखि देबा आर आंसर. तो लिखिबा let the required length of the cloth let the required length of the cloth
of the cloth be x meter, be x meter. तो पहले हमें टेबल कर दो, टेबल कले भलिया हबो टेबल लिखिया पहले वोमेन लिखिया वोमेन एट लिखिया पहले क्लॉथ इन मीटर्स, इन मीटर्स दीदी पहले कहबा 12 वोमेन केते मीटर क्लॉथ वेव करथिले ना 15, तो पहले कहबा 20 वोमेन केते मीटर क्लॉथ को कोन करिवे ना वेव करिवे. तो पहले आर आंसर अनुसार दीदी कहबा तर आंसर ले कह है पहले आज देयर इज ए direct variation, direct variation, direct variation. So देखो ये 12 by 15 equal to 20 by x. Then answer पे लेके ते जीवो ना 12 into x equal to 20 into 15. When x equal to 20 into 15 by 12. Then देखिबा तो 2 6 2 रे डिवाइड करिबा तो प्लान ते जीवो ना 4 ही भेजो 4 3 जा 12 4 5 जा 50 20 3 5 जा 15 तो प्लान के 25 मीटर सही जे प्लान x केते गेला ना 25 मीटर से क्लॉथ्स माने कोन करी ना तैयारी करी पारिबे. तो लार आंसर जे प्लान लिखबे hence the length required and the length required 25 meter. Hence the length required 25 meter. Required 25 meter. तो प्लान ए थिला हमरो 6 नंबर आंसर. प्लान 7 नंबर करिवो तो 7 नंबर प्लान देई देगा कोन 7 नंबर देइची प्लान 7 नंबर देइची if the weight of 5 sheets of a paper with the weight of the 5 sheets of paper is 20 gram. पांचटी सीट रो पेपर दिस प्लान कहैची पांचटी सीट रो पेपर अछि तार वेट प्लान केते होछ ना 20 ग्राम होछ. हाउ मेनी सीट्स ऑफ सेम पेपर वुड बी 2.5 ग्राम. केते सीट हेले जा कि तार वेट 2.5 किलोग्राम हेबो. तो प्लान आप क्वेश्चन से पढ़िया में जानि परुचे जे ये गोटे मध्ये डायरेक्ट वेरिएशन हेछ, ये मध्ये गोटे डायरेक्ट वेरिएशन हेछ. प्लान जो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िबा तो क्वेश्चन 7 एगोटे डायरेक्ट वेरिएशन हेछि. तो हम लिखि द पिला माने let the number of seats required, let the number of seats required number of seats required be x. केते ना x number of seats हम रिक्वायर हुए. तो प्लान में हुए तो पिला हमें कोन करा टेबल बनेबा. तो टेबल बनले प्लान देखिबा देखिबा नंबर ऑफ सीट्स लिखे पड़े. नंबर ऑफ सीट्स वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम्स यदि कहबा तले 5 सीट्स को प्लेट 20 ग्राम से जाउछ. यदि कहबा तले x नंबर ऑफ सीट्स कहबा तो प्लान केते जाउछ 2.5 ग्राम हे जाउछ. प्ले केते जाउछ 2.5 kg हे जाउछ. दैट मींस 2500 ग्राम बोली कही पारिबा. प्लेन 20 ग्राम थिला, 20 ग्राम थिला. तो प्लेन कहिछि केते नंबर सीट असले जाकि 2.5 kg दैट मींस 2500 ग्राम हे जीव. तो प्लेन ए क्षेत्र हम प्लेन कोन करबा एबे जे थिबो as there is a direct variation, direct variation. So यदि कहबा 5 by 20 equal to x by 2500 ग्राम. तो प्लान में देखिबा तार कोन देखिले ना 5 into 2500 equal to 20 into x. प्लान x equal प्लान कहबा 5 into 2500 by 20. फिर आंसर प्लान में देखिबा आंसर was 625 seats. केते प्लान ना 625 seats. तो hence the number of seats required,
the number of seats required equal to 625 प्लान ये थिला आर आंसर बोले कही परिवा पिलाने ए गला क्वेश्चन नंबर 7 चले गला क्वेश्चन 8 यदि करबा रीना टाइप 600 वर्ड्स इन 4 मिनिट्स रीना 4 मिनिट 6 वर्ड लिखि पारे व्हाट टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स तो पिलाने ताले केते समय तक लागिवो जे कि 3150 वर्ड्स टाइप करिबा पाए तो पिलाने सेम प्रोसेस जो डायरेक्ट वेरिएशन तो टेबल टेबल हबो केता टेबल हबो पिलाने एमते हबो तो टेबल में डायरेक्ट आंसर प्लान कर दूजी तुम डेम सेम जंती लिखा है से प्रोसेस से प्लान लिखिबा हम लिखोनी प्लान तो लिखले इट लिखा है जे प्लान को लिखा है नंबर ऑफ वर्ड्स इट लिखा हो टाइम मीन इन मिनिट्स जेतु प्ले मिनिट रे अछि तो प्लान कहबा ठीक है नै तो 600 सला 4 मिनिट हे जाउ 300 3150 की एक से प्लान भी कहबा ako आंसर जे हम बाहर करबा तो आंसर प्लान केना कर एबे बाहर करबा the 600 by 4 equal to 3150 by x प्लान बाहर करले हबा आंसर 600 into x equal to प्लान केते जो ना 4 into 3150 तो प्लान कहबा x प्लान केते हे जबो तो प्लान x हे जबो 4 into 3150 by 600 तो प्लान केते ले x इक्वल टू प्लान केते ले 21 मिनिट्स केते प्लान ले ना 21 मिनट hence the required time is 21 minutes प्लान ये थिला जे कि आंसर नंबर केते 8 क्वेश्चन नंबर 8 रे आंसर थिला पहले क्वेश्चन नंबर 9 रे आंसर दि पहले करबा क्वेश्चन नंबर 9 रे आंसर then देखो क्वेश्चन नंबर 9 कोन अछि ना रोहन टेक्स 14 स्टेप्स इन कवरिंग डिस्टेंस 2.8 किलोमीटर रोहन को लगे 14 स्टेप रे 2.8 मीटर कवर करिया पे व्हाट डिस्टेंस ही वुड कवर 150 स्टेप्स ताले 150 स्टेप्स कवर करिया को स्टेप रे केते डिस्टेंस कवर करिवो तो प्लान ए भय हमें टेबल टे करिवा तो टेबल प्लान ए भय आबो तो टेबल टे प्लान ए भय आबो टेबल टे हम लिखिया प्लस स्टेप्स लिखिवा इट लिखिवा डिस्टेंस स्टेप्स केते बेले 14 स्टेप्स हम केते जाउ ना 2.8 जाउ मीटर तो 150 स्टेप्स रे हम केते मीटर जीवा तो प्लान जे जीवा तार आंसर लिखि दा प्लान लिखिवा आज जेतु डायरेक्ट वेरिएशन होउची तो हम लिखिवा 14 केते 14 by 2.8 equal to 150 by x the answer प्लान कले केते करना 14 into x equal to 150 into 2.8 then they कहबा x equal to 150 into 2.8 by 14 तो आंसर प्लान यदि करबा तो आंसर प्लान हे जाउची केते ना आंसर होची x equal to 30 x equal केते 30 मीटर x equal 30 मीटर हम लिखि दबा hence the required distance is 30 meter तो प्लान ए थिला क्वेश्चन नंबर 9 रे आंसर क्वेश्चन नंबर 10 प्लान करबा क्वेश्चन 10 प्लान कोन देना 48 refined oil cans
of 5 liter can be packed 8 cartons of the same size. How many such cartons will be required to pack 260 cans? तो पिलाने कौन देइची पिलाने एक क्षेत्र देइची 48 कैन को हम पैक करिया को लागुची 8 टा कार्टून लागुची तो पिला देइची पिला नाम पर अछि 216 कैन अछि तमु केतेटी कोन लागिवो ना कार्टून रिक्वायरमेंट आसीबो तो पिलाने एभली क्वेश्चन दे देखि हम डायरेक्ट कोन करिया ना बॉक्स कर दबा पिलाने हम बॉक्स कले हम देखिबा the box कले हम कोन जानिबा जे पिलाने जे देखिबा नंबर ऑफ कैन्स इक्वल टू नंबर ऑफ कैन्स इक्वल टू 48 जे कहबा पिलाने 216 दे देइछ जे पिलाने कहबा नंबर ऑफ कार्टून्स पिलाने कहबा नंबर ऑफ कार्टून्स ने कहबा 8 आठी x 8 आठी पिलाने x हे गेला पिलाने एक क्षेत्र पे हमें कोन करबा नंबर ऑफ कार्टून्स 8x हे जाउछ पिलाने जेहेतु पिलाने हम देखुछ as there is a direct variation so the 48 by 8 equal to 216 by x equal to 48 into x equal to 216 into 8 x equal to 216 into 8 by 48 that is 36 then पिलाने कौन गेला नंबर 30 x equal पिले केते गेला 36 so हम लिखिया पिलाने hence the number of cartoons required is 36 तो पिलाने ये थला आंसर तो नेक्स्ट 11 नंबर पिलाने करिबा 11 नंबर आंसर 11 नंबर पिलाने कौन दे देखो 11 नंबर देइची द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर इज 22 रुपीस 50 पैसा कहबा यदि 15 टा न्यूज़पेपर प्राइस पिलाने केते अछि ना 22 टंका 50 पैसा जे देसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर तो पिला हम कोन कहिची ना 25 टी न्यूज़पेपर पिलाने प्राइस ताले केते हबो 25 टी न्यूज़पेपर प्राइस पिलाने केते लिखिया पिलाने जे देखबा तो पिलाने टेबल एबले बनेबा number of newspaper पे लिखियो एटी number of newspaper cost पे लिखरा cost तो number of newspaper 15 को केते हे जाउछ ना 37.50 25 such newspaper को हम केतना 100 रुपया आसी जाउछ प्लेन आसी जाउछ तले में कहिबा so as there is a direct variation we can write 15 by 37.50 equal to 25 by x तापर प्लान में कौन करिना 15 into x equal प्लान केते हे जीवो ना 25 into 37.50 नेक्स्ट प्लान कौन करिबा ना x equal to 25 into 37.50 37.50 by 15 5 3 जा 5 5 जा देन प्लान जे काटी दबा को तो हम काटले आंसर प्लान हे जाउची 3 1 जा 3 3 2 जा 6 decimal 3 5 is 15 12.50 into 5 equal to 62.50 तो अपना आंसर लिखी दे hence the cost of 25 newspaper 25 newspaper is 62.50 rupees पिलाने एथला 11 नंबर आंसर 12 नंबर आंसर करबे जाके लास्ट आउ थरे कहि रखु छी पिलाने यदि वीडियो तुमको भलो लागो थाए टिके लाइक माध्यम पिलाने जणाई पारो
तो तुम लाइक रे मु जानि पारे जे तुमको भल लागुच पिलाने मते मते पिलाने के एनर्जेटिक एनर्जी मते मिल जाउजे पिलाने काहे कि तुम पई वीडियो कर जे तुम माने वीडियो देखिबो एवं यदि लाइक टे करिवो कि चैनल सब्सक्राइब करे मते आउरी जोश मिले आउरी भलो आउरी संपूर्ण रूपे वीडियो आउरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम नै कि मते तुम पई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नै कि आसी पिला माने जे कि तुम मानकर टोटल क्लियर हे जो मैथमेटिक्स ऊपर तुमते बहुत क्लियर हे जिवो तो पिला माने आशा करे निहाती तुमको वीडियो भल लागुथिबो तो चैनल तो पिला ने सब्सक्राइब तो समस्त करिथियो जानि पारुछि सब्सक्राइब कर दैछो तुम माने तो एवं जो माने वीडियो भी देखुछो तुम संग साथी मानव सहित पिला माने शेयर भी करि पारो ए लेबर गेट्स 675 रुपीस फॉर 9 डेज 9 दिन रे गोटे लेबर को केते मिलुछि ना 675 टका मिलुछि यदि कहिबा हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट 900 रुपीस तो 900 टका पाइबा को तो केते दिन समय लागियो तो पिलाने आमे लिखिबा टेबल टे बनै देबा तो टेबल टे पिलाने बनेल देखिबा ए बार टेबल टे हबो रुपीस एंड डेज देखो लिखा एटा हो रुपीस पिलाने केते हो ना रुपीस एटा प्लान हो डेज रुपीस पिलाने के 675 रुपीस को 9 डेज लागुची से 900 रुपीस को x डेज लागुच तो पिलाने जे कहबा x डेज लागिवो तो पिलाने कहबा इट इज डायरेक्ट वेरिएशन होथिबारु तो 675 बाय 9 इक्वल 900 बाय x हे जीवो तो तापर जे पिलाने कहबा 675 into x equal to 900 into 9 900 into 9 पिलाने x पिलाने कहबा तो x पिलाने केते हे जीवो ना 900 into 9 by 675 तो पिला को काटी देले पिला में पाइबा x equal to केते पाइ जे ना 12 पाइ जे केते पाइ जे पिला में 12 पाइ जिबा पिला 12 पाइ तो हेंस लिखबा हेंस पिला कहबा hence the number of days required equal to 12 days पिलाने एथिला हमरो आंसर जे कि चैप्टर 4 रो फर्स्ट वर्कशीट थिला वर्कशीट 1 आशा कर समस्त डाउट पूरा संपूर्ण रूपे क्लियर होईची केमिति एक्सरसाइज होउची समस्त को क्लियरली बुझी हेथिबो तेनु करी कहउची जदि क्लियरली बुझी परछि चैनल टिके सब्सक्राइब कर एवं वीडियो टिको लाइक कर एवं तुम संग साथी तो शेयर कर जदि को जगह तुम बुझी पारिनो तो कमेंट सेक्शन में पिलाने जणै पारो धन्यवाद वीडियो को देखिथियो संपूर्ण शेष पर्यंत आशा करे भलो हेथिबो समस्त नेक्स्ट वीडियो देखाबा।